Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. In this lecture we will discuss a ring homomorphism and a ring isomorphism. हमने ग्रुप थ्योरी के डिस्कशन में देखा ही है कि किस तरीके से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है टू स्टडी दी थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। उसी प्रकार से रिंग में भी रिंग होमोमॉर्फिज्म और रिंग आइसोमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। Okay, so let us start this lecture by writing the definition of homomorphism first, and then we will discuss the concept of isomorphism. So we are having first the definition of homomorphism. Okay, definition, and firstly we are having ring homomorphism. पर्टिकुलरली रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर टू रिंग्स एंड मैपिंग बिटवीन दीज टू रिंग। ओके, और उसी मैपिंग को हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या होगी दैट वी आर गोइंग टू राइट। रिंग homomorphism phi, we always denote ring homomorphism phi by phi. Okay, phi from a ring R to a ring S is a mapping from ring R to S that preserves, this word is important, okay, preserves the two ring operations. Okay, that is, if we say that is for all A and B in the ring R, we are having these two properties of the mapping phi. The first one is that if we take the phi image of addition of A and B, this is the addition of A and B, and then we are taking the phi image, then it must be equals to the addition of phi image of A and phi image of B. Okay, and then we are coming to the phi image of AB, that is the product of A and B. It must be equals to the phi image of A times phi image of B. Okay, so here you can see the phi image of addition of two element is equal to the addition of phi image of these two elements. Okay, and the phi image of product of these two elements is equal to the the product of the phi images of these two elements. Okay, now let us discuss this important term that preserves the two ring operations. हमने देखा ही है कि किस तरीके से हम एक रिंग को डिफाइन करते हैं आर प्लस डॉट। तो रिंग ऑपरेशन, टू रिंग ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखने का सेंस क्या है कि जब हम कोई एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं इस आर से, तो ए और बी के बीच में ऑपरेशंस के बाद जो हम फाई इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, दैट फाई इमेज इज एग्जैक्टली सेम to the addition of 5 images of that particular elements. Okay, now this addition is in the ring S and this addition is in ring R. Okay, तो यहाँ पर जो first operations हैं that will be preserved by this phi, and similarly the second, यहाँ पर जो product है वो ring R के लिए है और यहाँ पर जो product है that is from the ring S. Okay, अब ये किस तरीके से work करते हैं, let us understand this. एंड यहाँ पर हम कुछ मैपिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से फाई वर्क कर रहा है. ओके, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज आर एंड दिस इज आर एस. ओके, this is S and this is our R, and we are going to define a function from R to S. Now suppose that this is a mapping
This is a point A and this is a point B. Okay, this is our point B. एंड वेन वी एड दीज टू एलिमेंट्स, क्योंकि आर रिंग है तो इनका एडिशन भी इसी रिंग आर में ही रहेगा. तो सपोज कि इनके एडिशन के बाद वी आर हैविंग दिस पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट सपोज इज डिफाइनिंग ए प्लस बी. और ये कैसे मिल रहा है? वेन वी आर एडिंग दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट बी. ओके, एंड सपोज जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं देन वी आर हैविंग सम अनदर एलिमेंट्स. तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी आर हैविंग सपोज दिस एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट ए टाइम बी. ओके, तो ये जो ए बी है दैट रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ठीक है, अब क्योंकि हम फाई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर से एस में, आई एम यूजिंग दी वर्ड मैपिंग और फाई. जब हम मैपिंग करें इसका मतलब यहाँ से हर एक पॉइंट की इमेज हमें एस में मिलेगी. तो अगर हम इस ए की फाई इमेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा. तो सपोज वी आर हैविंग दैट द फाई इमेज ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस वन. ओके, दिस इज आर फाई ऑफ A. Okay, this point defines the phi of A. Okay, and similarly somewhere we are having the phi of B. So let me write that this point is phi of B. Okay, and we are having this image as this one. Okay, so this is phi 1, this is phi, this is also phi, right? Now जैसे ही हम इस एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें कोई एक इमेज मिलेगी. तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जब हम फाइव इमेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर पॉइंट की. ओके, सो वी आर हैविंग सम पॉइंट हियर, दिस इज आर फाई ऑफ ए प्लस बी. ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा दिस एलिमेंट विल बी द एडिशन ऑफ सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिफाइंस द एडिशन ऑफ this phi of A and phi of B. ठीक है, this defines phi of A plus phi of B. Then रिंग की ऑपरेशंस प्रिजर्व है. इसका सेंस क्या है कि जब हम इनका एडिशन लेके जो पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो पॉइंट इस A प्लस B पॉइंट की फाई इमेज ही है. ओके, सो वी आर हैविंग द फाई इमेज ऑफ A plus B. And then we can talk about the product as well. So suppose this point defines the product of phi A and phi B. So this is phi of A and phi of B. Okay, and the concept says कि जब हम इस A B point की phi इमेज आइडेंटिफाई करेंगे so this is exactly this point. Okay, this is our phi of A B. राइट, सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम एलिमेंट्स की फाइव इमेजेस आइडेंटिफाई करें और फिर उनके एडिशन की फाइव इमेजेस आइडेंटिफाई करें तो ये जो एक मैपिंग है दैट इज कंसिस्टिंग विद दीज ऑपरेशंस. राइट, सो आई कैन से यहाँ पर एडिशन है जो कि R का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एडिशन S का रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिंग S का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिंग R का मल्टीप्लिकेशन है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिजर्वेंस ऑफ टू रिंग ऑपरेशंस बाय दिस मैपिंग फाई. और जो कोई भी मैपिंग इन रिंग ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है उसे ही हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं. ठीक है, सो आई होप यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड प्रिसाइजली द प्रिजर्वेंस ऑफ टू रिंग ऑपरेशंस. ओके, नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म. तो जब भी हमें सपोज कि हमारे एग्जाम में ही हमें डेफिनेशन पूछा गया है रिंग आइसोमॉर्फिज्म का, तो सबसे पहले हम रिंग होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ही लिखेंगे और उसके बाद हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे. सो वी आर हैविंग रिंग आइसोमॉर्फिज्म because we are using the word homomorphism while defining the isomorphism. Okay, ring homomorphism
यहाँ पर जब भी हम आइसोमॉर्फिज्म या फिर होमोमॉर्फिज्म लिख रहे हैं अभी तक, तब हम रिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा रिंग आइसोमॉर्फिज्म इंस्टेड ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ओनली, और यहाँ पर हमने लिखा रिंग होमोमॉर्फिज्म, ना कि होमोमॉर्फिज्म। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिंग आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर रखती हैं। ठीक है, जब हम आगे कॉन्सिक्वेंट एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। ठीक है, सो रिंग होमोमॉर्फिज्म that is both 1 to 1 and on to is called a ring isomorphism. Okay, तो अगर हमें रिंग आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पूछी जा रही है तब भी हम होमोमॉर्फिज्म को पहले इस तरीके से डिफाइन करेंगे और फिर इस तरीके से रिंग आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। अब क्योंकि ये एक ही तरीके की मैपिंग्स हैं जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, अगर उसमें हम वन वन ऑन टू नेस ऐड कर दें तो वही होमोमॉर्फिज्म फिर आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। तो क्या वन वन ऑन टू ऐड करने से हमें होमोमॉर्फिज्म के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं क्या? सो लेट अस डिस्कस दिस कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन होने से दो रिंग के स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से डिफरेंट आता है। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट this is you can consider as a knot. So let me write knot or ring isomorphism is used to show that two rings are algebraically, okay, this word is important, algebraically identical. Okay, and if we talk about the ring homomorphism, then a ring homomorphism is used to simplify a ring while retaining certain of its features. Okay, अब देखिए जब भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड है किन्हीं भी दो रिंग्स के बीच में, इसका मतलब वो एल्जेब्राइकली आइडेंटिकल है। अब एल्जेब्राइकली आइडेंटिकल है इसका सेंस ये है कि हम जब भी रिंग के किन्हीं भी एलिमेंट्स का बिहेवियर देखेंगे, उनके ऑर्डर की बात करेंगे या फिर उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट एलिमेंट्स की इमेजेस के बारे में बात करेंगे, उनमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, या फिर रिंग के अंदर जो ग्रुप बन रहा है उसके ऑर्डर की बात करेंगे, यूनिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, इन सभी के जो कंसेप्ट हैं उन्हें हम अलजेब्राइक कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ये इस तरीके के सभी कंसेप्ट जिन्हें हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज की रेस्पेक्ट में रिंग्स आइडेंटिकल ही होती हैं अगर आइसोमॉर्फिज्म अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली रिंग है या फिर उसके एलिमेंट्स के बारे में हम डायरेक्टली नहीं पता कर पा रहे हैं तो हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं और उन होमोमॉर्फिज्म से हम उसके जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट वी कैन स्टडी दैट स्ट्रक्चर। ओके, वहां पर हम एल्जेब्राइकली आइडेंटिकल होने की बात नहीं करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट the orders, we are not talking about the existence of unity element and all that. Okay, so
प्रोबेबली कि हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया ही है, रिटेनिंग सर्टेन ऑफ इट्स फीचर्स। ओके, तो जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से ही अलग से स्ट्रक्चर नहीं आए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म। और यहाँ पर एक स्लाइट डिफरेंस भी आपने देखा कि किस तरीके से आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म किन्हीं दो रिंग्स के बीच में काम करती हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप देख पाएंगे कि होमोमॉर्फिज्म को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और उनके प्रूफ में कौन से स्टेप्स हमने यूज करने। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। वी आर हैविंग द फर्स्ट वन. This is example number 1 and it says that consider the rings. Which rings? First one is Z plus and multiplication. Okay, and the second one is Z n addition modulo n and multiplication modulo n. ये दो रिंग्स हमने कंसिडर की है। define a mapping phi from Z to Zn such that we are having that phi of k such that for all k belongs to Z, we are having that phi of k is going to be k mod n. Okay, then show that phi is a homomorphism और इस होमोमॉर्फिज्म को हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। सो लेट अस राइट दिस सॉल्यूशन फर्स्ट एंड देन वी विल डिफाइन दिस एज अ नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। सो वी आर हैविंग फर्स्ट दैट हमें गिवन है फाई एक मैपिंग है। सो गिवन दैट फाई डिफाइंड फ्रॉम Z plus dot to Zn plus n and multiplication n such that for all k belongs to Z, we are having that phi of k is equals to k mod n. ओके, सो हमें कोई भी इंटीजर कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पर हम मोड की कुछ मॉडुलस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं है सो आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड कि किस तरीके से वर्क करती है बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो लेट मी राइट कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट let x and y are any two integer from the set Z. अब Z के लिए अगर हम कोई भी specific n की बात करेंगे so let us choose that I am just writing the example so that we can understand. Let us fix this n equals to 10. Okay, अब x और y कोई भी वैल्यू हो सकती है। Let us take x equals to 17 and y equals to 26. ओके, हमने कोई भी दो ऐसी वैल्यूज को चूज कर लिया है। नाउ जब हम x और y की बात कर रहे हैं तो इसे जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमेशा देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट, यहाँ पर नंबर थ्योरी का भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन राइट x इक्वल्स टू, जब हम x को n से डिवाइड करेंगे सो वी आर हैविंग q1 एज अ क्वोशंट एंड वी आर डिवाइडिंग बाय n एंड देन वी आर हैविंग सम रिमाइंडर r1 वेयर r1 ऑब्वियसली जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली लेस देन n तो होगा ही। एंड y को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सपोज q2 कोई क्वोशंट रहा होगा और n से हमने डिवाइड किया और r2
हमें रिमाइंडर मिला है वेयर ऑफ कोर्स दिस R2 इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन n। तो जैसे अब यहाँ पर हम बात करें इस सिनेरियो में, हमने ये सपोज कर लिया, और जब हम इस वाले फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख पाएंगे, 17 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 10 प्लस 7, राइट। तो यहाँ पर R1 ये है, और 26 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम 10 प्लस 6, ठीक है। तो ये हमारा Q1 है, ये Q1 है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये हमारा R1 हुआ और ये R2 है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई। नाउ ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि हम क्या प्रोसीड कर रहे हैं। अब अगर हम इनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमें किस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो इनकी हम फाई इमेज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। सो देन व्हाट अबाउट द फाई इमेजेस, देन phi of x is equals to phi of q1 n plus r1, that is equals to q1 n plus r1 mod n, and we know the value of this particular term is equals to r1, राइट क्योंकि जब हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो n के जितने भी फैक्टर होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ जीरो एलिमेंट, राइट। तो ये हमें मिल गया R1। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी राइट साइड बाय साइड। सो सपोज अगर मैं आइडेंटिफाई करूं व्हाट इज द इमेज ऑफ phi 17, so that is same as phi 1 time 10 plus 7, and obviously that is equals to 1 time 10 plus 7 and then mod 10। अब mod 10 इसका मतलब क्या है, हमें ऑपरेशंस लगाने हैं विद द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो एडिशन मॉड्यूलो 10 के लिए वी विल हैव द वैल्यू 7 ओनली, सो वी हैव 7, ठीक है। तो यहाँ पर R1 हमारा 7 ही था और वही हमें वैल्यू मिली है। सो वी आर हैविंग phi of x like this, and then we come to the phi image of y। so if we come to the phi image of y, then following this similar process we are having q2n plus r2, and obviously this will be equals to q2n plus r2 mod n, right। and when we apply this then we will have r2। और यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे so जैसे हमने x के लिए लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी हम लिखेंगे phi of 26 is same as phi of 2 times 10 plus 6, and obviously this is equals to 2 times 10 plus 6 mod 10, and then applying this we are having this is equals to 6. So again R1 is as 7 and R2 is 6. Now if we talk about the phi image of their addition, then so we are having, now we can have the x plus y that is same as q1 plus q2 time n plus r1 plus r2, okay, this is what we can have. And of course the multiplication xy that is equals to q1n plus r1 एंड मल्टीप्लाई बाई q2n प्लस r2। देखिए जब हम यहाँ पर ऑपरेशंस लगाएंगे तो सिंपली भी हम देख पा ही रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी। बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट द नंबर थ्योरी देन this particular process is helpful for you, okay। so if I write this one, then we have the square first, we have q1 q2 and square, and then the multiplication of n, so we are having q1 then r2 and plus r1 q2 time n and plus when we multiply this r1 r2, okay। so this is what we can have from the product, okay। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें so we are having that 17 plus 26, I am talking about this one only, okay। और जब हम इसको ऐड करेंगे then we are having this will be 43 and
इस 43 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ Q1 प्लस Q2 की फॉर्म में, देन यू कैन राइट व्हाट अबाउट द Q1, दैट इज 1, Q2 was 2 time 10 and plus R1 R2 was 7 plus 6. You can write in this form as well. Okay, so this will be 3 times 10, 30 plus 13, that is equals to 43, right? And again, if we talk about this 17 times 26, that is same as if you write in the form, you आप इस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट स्टिल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करेंगे 10 के साथ तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिले? ओके, लेट मी राइट फर्स्ट दिस वन. So this will be congruent to, let me write, this will be 0 and 17 and 7 plus 6 will be 13 mod 10 and its value is 3, right? So again we are reducing this value R1 plus R2 by mod 10. Okay, now if you multiply 17 and 26, then we are having 4 4 2, and obviously this is congruent to, if we reduce this by modulo 10 operation, then we are having 2 mod 10. ठीक है, the multiplication is congruent to 2 mod 10, right? So we are having this one so far about the multiplication and so on. Now if we come to the 5 images of x and y, then you can see that we are having this one. So now what about the phi image of x plus y? That is the phi image of q1 plus q2 time n plus r1 plus r2, right? And obviously that is equals to q1 plus q2 time n plus r1 plus r2 time and it's a mod n. Okay, now if you think अगर हम mod n के साथ इसको reduce करेंगे, then this will be equals to 0, so that is equals to r1 plus r2 mod n, right? So this is what we are having. Okay, now can we write this r1 plus r2 is, this is equals to r1 mod n plus r2 mod n. Okay, you can verify this, that we can write this one. Look at this, अगर हम r1 प्लस r2 विद मोड n की बात करें तो हमें क्या मिल रहा है? r1 प्लस r2, दिस इज 7 प्लस 6, और इनके जब हम मोड की बात कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है. नाउ व्हाट अबाउट देयर एडिशन? r1 प्लस r2 के मोड एडिशन करने के बाद इफ वी आर अप्लाइंग द मोड, देन वी आर हैविंग 3. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. अगर हम R1 मोड n और R2 मोड n के लिए बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? R1 is 7 and R2 is 6. जब हम इन दोनों का मोड 10 के साथ देखेंगे तो मोड 10 is 7, मोड 10 is 6 and 6 plus 7 is 13. Again they will be reduced by a modulo 10 and we are having the 3 value. So we can say somewhere this is equals to 3 and obviously this is equals to 3. राइट, एंड यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, दिस इज एडिशन. नाउ दिस इज सॉरी एडिशन मॉड्यूलो n. ठीक है, यहाँ पर ये ऑपरेशंस है, राइट. एंड जब हम R1 और R2 के साथ बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेशंस की, क्योंकि R1 तो लेस देन है ही n से और R2 भी लेस देन है n से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट. नाउ दिस इज इन n. ओके, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ r1 mod n विल बी इक्वल्स टू r1 mod n विल बी इक्वल्स टू rn प्लस दिस इज मॉड्यूलो n r2, राइट. इसकी वैल्यू भी 3 आनी है और इसकी वैल्यू विद एडिशन मॉड्यूलो 10 3 वैल्यू आएगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज r1? दिस इज phi ऑफ x एंड प्लस n phi of y. So we are having the preservance of addition operation, right? Now what about the product? So we can have the product phi of xy, that is equals to phi of q1 plus q1 time q2 n square. We are having this one q1 time q2 n square, and then we are having
plus q1 r2 plus q2 r1 time n and plus r1 r2, and when we come to the reduction by modulo 10, then this will be equals to q1 q2 n square and plus q1 r2 plus q2 r1 time n plus r1 r2 modulo n, right? जब हम इसे n से reduce करेंगे, so this will be 0, this will be 0. We are having r1 r2 mod n. Okay, now look at the r1 r2, product of r1 r2. Okay, so if we think about the r1 r2, that is equals to 7 times 6, and which is equals to 42, and this is equals to 2 mod 10, right? अगर हम mod 10 के बारे में बात करेंगे तो ये 2 mod 10 है. Now what about their respective multiplication? So if we talk about the r1 mod 10 and time, sorry, 7 time mod 10 and 6 time mod 10. So this will be equals to the 7 mod 10, that is equals to 7. This is equals to 6, and obviously this is congruent to 2 mod 10. ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं कि r1 r2 को मल्टीप्लाई करें या फिर उनके मॉडुलस को मल्टीप्लाई करें, अगेन द रिडक्शन विल गिव द सेम वैल्यू. ओके, सो यू कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू r1 mod n times r2 mod n. Okay, now r1 r2, that will be equals to, this is equals to, let me write, this particular product is in reduction by n. Okay, and again we are having equals to r1, then multiplication modulo n, and then we are having r2. Now what is r1? That is phi of x, and then this is phi of y. Okay, so we are having this one. So again the addition, 5 measures of addition is the same as the addition of 5 measures, and the 5 measures of product is same as product of 5 measures, right? सो दिस इज अबाउट दिस होमोमॉर्फिज्म, जहां पर हमने प्रूव किया कि किस तरीके से हम सेट ऑफ इंटीजर से Zn में एक मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म के जैसे डिफाइन कर सकते हैं. नाउ दिस होमोमॉर्फिज्म हैव सम सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज, और उसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे ही. बट बिफोर दैट लेट अस रीडिफाइन दिस होमोमॉर्फिज्म एज नेचुरल होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, सो वी आर डिफाइनिंग नेचुरल होमोमॉर्फिज्म. ओके, और इससे हम कैसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट द मैपिंग phi defined from z plus multiplication to zn addition modulo n and multiplication modulo n such that for all k belongs to z, phi of k is going to be k mod n. Is a homomorphism is a homomorphism known as natural homomorphism. ये एक important homomorphism, okay, that relate infinite structure to a finite structure, right?